So, good evening everyone. Subha Sandhya. ମୁଁ ହଉଛି ଅମ୍ଲାନ ଅଂଶୁମତ ସାହୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ MBBS ଛାତ୍ର। ମୋର NEET 2022 ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଥିଲା 424। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କ୍ଲାସ 11th କେମିଷ୍ଟ୍ରି ର यूनिट 5 थर्मोडायनामिक्स तार पार्ट 1 ଆମେ କାଲି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାର ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ପଢିବା। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି गिव्स फ्री एनर्जी ଆଉ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ବିଷୟରେ। ତ ପାର୍ଟ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। तो कल में पढ़ते कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन heat absorbed and the work performed on the system. So first law of thermodynamics कौन थिला? del U equal to Q plus W. Del U equal to Q plus W means where del U is the internal energy of the system, Q और W थिले heat और work done respectively. So सेटा थिला relationship between heat absorbed and the work performed on or by a system. But first law of thermodynamics रो shortcoming कौन थिला? Shortcoming एटा थिला जे it put no restriction on the direction of heat flow. सी डिफाइन कर एटा डिफाइन करि पार नथला जे डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कोडू कोडी अछि माने एई सिस्टम रो अदर सिस्टम को अछि माने से जस्ट एनालिटिकली अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कंसीडर करथला बट को डायरेक्शन रे ट्रांसफर होछि सिस्टम रो सराउंडिंग को होछि बा सराउंडिंग सिस्टम को होछि सेटा पॉसिबल ना नै सेही विषय रे हमहु किछि भी इंफॉर्मेशन दो नथला. However, the flow of heat is unidirectional from the higher temperature to a lower temperature. एटा तमे जानछे कि flow of heat सब बळे higher temperature to lower temperature direction रे हबो. In fact, all naturally occurring processes, whether chemical or physical, will tend to proceed spontaneously in one direction only. So obviously, spontaneously सब processes गोटे direction रे जिबाबू means normally जिबे. But जदि हमें किछ external फोर्स पकेबा भी एक्सटर्नल कंडीशन से मिदियर हमें क्रिएट करबा तो सही केस रे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हमें रिवर्स कर परिया. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल रिएक्शन से जाओ सेतळे रिवर्स सब जेतळे हमें एक्सटर्नल कंडीशन से मिदियर करबा तो स्पॉन्टेनियसली गोटे डायरेक्शन में से माने रिएक्शंस माने प्रोसीड करियो. हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी. ऑब्वियसली हीट को कोल्डर बॉडी रो वार्मर बॉडी को ट्रैवल करिया पे हमको दरकार कोन पड़ियो हमको दरकार पड़ियो हीट इंजन बा रेफ्रिजरेटर दरकार पड़ियो सेथरे हमको एक्सटर्नल वर्क करिया पड़ियो. से एक्सटर्नल वर्क को यूज करी कि हमें हीट को कोल्डर बॉडी रो वार्मर बॉडी को ट्रांसफर हो जाए. स्पॉन्टेनियसली हीट केबे भी कोल्डर बॉडी रो वार्मर बॉडी को ट्रांसफर हबनी ऑन इट्स ओन. The gas in a container will not spontaneously contract into one corner or carbon dioxide will not form carbon and dioxide spontaneously. तो जो कंटेनर जो गैस अछि से केबे भी स्पॉन्टेनियसली गोटे कॉर्नर रे जाई कि रहबनी से सब बोले ऑब्वियसली होल कंटेनर रो शेप और वॉल्यूम को ऑक्युपाई करिवो और कार्बन डाइऑक्साइड केबे भी स्पॉन्टेनियसली कार्बन और डाइऑक्सीजन रे स्प्लिट हबनी. सो ऑब्वियसली ए सब जगह रिएक्शन जो अछि स्पॉन्टेनियसली वन डायरेक्शन रे फ्लो करि ताको अपोज करिया पे बा ताको रिवर्स करिया पे हमको एक्सटर्नल वर्क देबा पड़ियो. In this section, we shall establish some criterion for these processes, whether these will take place or not. So, को process spontaneous, को process spontaneous नहीं, सेटा जानिया पे आज हम पढ़िया spontaneity, तापरे पढ़िया entropy विषय. Entropy कोटे नुआ thermodynamic function, से भी कोटे state function. Entropy through रो हमको जाना पड़िबो कि कोटे process spontaneous ना नहीं. Spontaneous reaction is the one which occurs immediately when contact is made between the reactants. So reactants भितर contact हो जो reaction complete हो जाए बा start हो जाए सही reaction को कहा जाए spontaneous reaction. For example जदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गोटे रूम टेम्परेचर रे मिक्स करी गोटे कंटेनर रे छाड़ी देबा तो सेमाने many years जाए बिना रिएक्ट करी सेठे रहि जिवे. Many years जाए without observing any perceptible change. मीन्स सेमाने एक्चुअली तो रिएक्ट करते बट हमको देखा जीवनी एते स्लो थिवो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन. रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो तो मेनी इयर्स पर भी हमको लागुथबो से रिएक्शन बिल्कुल प्रोसीड करनी बट से रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लोली प्रोसीड करिछि और स्टिल सेडा हमें सेति स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही कहबा. सो स्पॉन्टेनिटी रो मीनिंग होछि हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. सो ऑब्वियसली जदि में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर भी गोटे चैम्बर भीतर रखि देबा
मेनी इयर्स पर भी टिके ना टिके वाटर फॉर्म ऑब्वियसली हेतिबो तो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी हेल्प रे सेमानक पाखरे पोटेंशियल अछि कि सेमाने रिएक्शन टाको प्रोसीड करि परिबे तो सेटा को स्पॉन्टेनिटी को हबो मैटर करेनी से रिएक्शन केते स्लो जाउची बा केते फास्ट जाउची बट हाउएवर इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस देखो इट कोन लिखा होची इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस तो हमू बस एटा जाना पड़ला से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अछि ना नाही रेट ऑफ रिएक्शन विषय रे किछि भी हमहु जाना पड़लानी सेटा एक्सट्रीमली स्लो गला एक्सट्रीमली फास्ट गला से विषय रे किछि इंफॉर्मेशन मिललानी ओनली इंफॉर्मेशन मिलला कि से रिएक्शन दा स्पॉन्टेनियस हबो ऑन इट्स ओन हबो विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी रे असिस्टेंस रे हबो another aspect of spontaneous reactional process is that these cannot reverse their direction on their own obviously हम देखले कि डायरेक्शन को जदि हम रिवर्स करार अछि हीट को जदि कोल्डर रो हॉटर बॉडी को ट्रांसफर करार अछि त हमकु एदर हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दरकार पड़िबो ऑन देयर ओन समान केबे भी निज डायरेक्शन को रिवर्स करे परिबेनी a spontaneous process is a irreversible process and may only be reversed by some external agency spontaneous process gote irreversible process only external agency रो वर्क द्वारा हमें सेटा को रिवर्स कर परिया इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ए क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी हमें देखिवा कि एंथैल्पी जो रिएक्शन रे डिक्रीज करछि मींस डिक्रीज करछि इन द सेंस नेगेटिव अछि मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें कहबा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस माने स्पॉन्टेनियस की एट जदि हमें देखिवा एते तीनटा एग्जांपल देछि नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ए रिएक्शन जगह रे एंथैल्पी नेगेटिव अछि मींस एटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एथिरे सिस्टम को सराउंडिंग सिस्टम टू सराउंडिंग को जाके रिलीज होची एठे -46.1 जूल एमि एमि रिलीज होची तो एथिरु ए रिएक्शन गुडा एक्सोथर्मिक और ए रिएक्शन गुडा स्पॉन्टेनियस भी आपे आपे जगह हे जीवो तो एथि ए तीनटा को देखि हमु ऑब्वियसली लागिवो कि केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज़ डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेकन प्लेस दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट जदि मैं आउ किछि रिएक्शंस देखिबा फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन सहित ऑक्सीजन रो रिएक्शन एठी एंथैल्पी पॉजिटिव माने एटा एंडोथर्मिक रिएक्शन एठी एनर्जी सराउंडिंग रो सिस्टम भितर को एब्जॉर्ब होची सिस्टम एतरे एनर्जी सराउंडिंग टू होची आउट एग्जांपल होची कार्बन प्लस सल्फर रो कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म होची सेठी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होची ए दिटा एंडोथर्मिक बट ए दिटा रिएक्शन भी दो एंडोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस तो सेठो हमर गोटे जिंसर क्लैरिफाई हला कि जरूरी नहीं कि गोटे रिएक्शन सेतेबेले स्पॉन्टेनियस हो जतेबेले तार एंथैल्पी नेगेटिव हो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हे परिबो तो एथिरो हमु जाना पड़ला एंथैल्पी ऊपर बेस करिके हमें को भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बा नॉन स्पॉन्टेनियस कहि पाइबानी हमको आउ गोटे नुवा थर्मोडायनामिक फंक्शन डिफाइन करिया पड़िबो जोडारू जाना पड़िबो कि गोटे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना नै सेही नुवा थर्मोडायनामिक फंक्शन होची एंट्रोपी एठी देखो गोटे एंथैल्पी डायग्राम देछि एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट 8 थिला नेट हीट इवॉल्व हे गला तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे आसला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे सबले टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हबो सेतिमै टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव कैन डू इट हीट इवॉल्व हेची बट एठी टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट तळे रहइबो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऊपर रहइबो बिकॉज़ नेट हीट सराउंडिंग रो एब्जॉर्ब हेकी से रिएक्शन को कंप्लीट करछि therefore it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be contributory factor for spontaneity it is not true for all cases decrease in enthalpy obviously got a contributory case got a contributory factor spontaneity ପାଇଁ spontaneous reaction हेबा ପାଇଁ decrease in enthalpy got a contributory factor decrease in enthalpy हेले possibility बढ़िबो but सेटा sole process sole factor नै आउरी भी अन्य factors रहिछि तो गोटे एमिलिया केस ना जेतरे del h equal to 0 that is no change in enthalpy but still the process is spontaneous हम गोटे एमिलिया केस नले दोठे enthalpy change 0 अछि means reactants of product भितरे किछि भी enthalpy change हेइनी but still the process is spontaneous for example जदि हम diffusion of two gases नबा गोटे चैम्बर भितरे एमि गोटे बाउंड्री पका दबा एपटे गोटे गैस रखिबा सेपटे गोटे गैस रखिबा तापरे किछि समय पर से बाउंड्रीटा हटे देबा तो से भितर डिफ्यूजन आपे आपे हे जिवो एटा गोटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट एथिरे किछि भी एंथैल्पी चेंज हेनी इनिशियल एंथैल्पी जते थिला बा टोटल लेटर फाइनल एंथैल्पी भी सेट अछि तो नेट एंथैल्पी चेंज एथिरे 0 अछि बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस
बट एथरो हमु गोटे जिंस जना पड़ला द सिस्टम हैज बिकम लेस प्रेडिक्टेबल और मोर chaotic बट एथिरे कोन हला chaos बढ़ी जायछि डिसऑर्डरनेस बा रैंडमनेस बढ़ी जायछि सिस्टम रे तो एथरो हमु गोटे जिंस जना पड़ला जदी गोटे आइसोलेटेड सिस्टम निया हला एटा गोटे आइसोलेटेड सिस्टम मैटर बा एनर्जी एथरो बाहर को जाय परिबानी isolated system जला there is always a tendency for the system's energy to become more disorder or chaotic तो जदी हम कोन isolated system नेबा से isolated system रो एनर्जी रो सब बड़े टेंडेंसी थाए कि से मोर डिसऑर्डरनेस मोर रैंडमनेस टुवर्ड्स को जाए so this could be a criteria for spontaneity तो ए जो डिसऑर्डरनेस ए जो रैंडमनेस हेबा पई जो the tendency to become more disorder or chaotic means जो चाहे आइसोलेटेड सिस्टम की से मोर डिसऑर्डर हो जाए एटा ही स्पॉन्टेनियस चेंज पे गोटे क्राइटेरियन हेबे और एटा को डिफाइन करिया पे एंट्रोपी अनाला एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंट्रोपी गोटे रैंडमनेस बा डिसऑर्डरनेस रो मेजर ग्रेटर इज द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हायर विल बी द एंट्रोपी तो जत्ते अधिका डिसऑर्डर हबो जत्ते अधिका रैंडमनेस हबो आइसोलेटेड सिस्टम रे सत्ते अधिका हबो सही सिस्टम रे एंट्रोपी as far as the chemical reaction is concerned this entropy change can be attributed to the rearrangement of atoms or ions तो ये जो chemical reaction रे entropy कौन atoms और ions मैंने movement करेगी rearrangement कर ले disorderedness व randomness बढ़िला एटा ही entropy for a chemical reaction if the structure of the product is very much disordered than that of the reactant there will be a resultant increase in entropy so the product more disorder अच्छी reactant to the final entropy is greater than the initial entropy तो entropy change positive होला okay crystalline solid state is the state of lowest entropy whereas gaseous state is the state of highest entropy एटा मन रखिबो कि जो crystalline solid state अछि सेथिरे lowest entropy काहे कि काहे ना सेथिरे सबुडो अधिका orderly arrangement थाए particles माने closely packed हे कि थांती गोटे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सब अधिका था इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत अधिका था इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम था फोर्सेस सब अधिका था तो सही केस रे बहुत गोटे ऑर्डरली अरेंजमेंट है जोड़ा में सॉलिड स्टेट रे पड़िवा तो सेतमे क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट रे होची द स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी और हाईएस्ट एंट्रोपी होची गैसियस स्टेट एंड सेतरे किछि भी ऑर्डर न था सब यार्ड साइड रैंडमली डिसऑर्डर मोशन करंती entropy like any other thermodynamic property such as internal energy or enthalpy is also a state function तो हम कहली entropy भी गोटे state function से path ऊपर depend करेनी just like internal energy or enthalpy so whenever heat is added to the system it increases the molecular motion तो heat जतବେଳେ ଆମେ system को add करिवा molecular motion बढ़िबो kinetic energy obviously बढ़िबो जतବେଳେ ଆମେ heat energy गोटे system को देबा obviously molecular motion जगह increase करछि तो ता जो गोटे randomizing influence होछि सिमिलरली जदि गोटे टेम्परेचर हमें बढ़ेवा सेतळे भी एंट्रोपी बढ़िबो हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस देन वन एट द लोअर टेम्परेचर तो टेम्परेचर भी गोटे मेजर ऑफ chaotic मोशन तो हीट गोटे मेजर ऑफ chaotic मोशन टेम्परेचर भी गोटे मेजर ऑफ रैंडमनेस तो हमें बे एज्यूम करबा कि हीट और टेम्परेचर रो हम किछि गोटे एंट्रोपी रो फार्मूला डिराइव करि परिया so heat added to a system at lower temperature causes greater randomness than the same quantity of heat is added to a higher temperature तो जते बडे गोटे lower temperature रे गोटे amount of heat हमें सप्लाई करले से जति की randomness प्रोड्यूस करिवो ताठु कम randomness प्रोड्यूस हो जते बडे सही amount of heat हमें गोटे higher temperature रे सप्लाई करिवा तो यही तो हमें जाना पड़छि कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस एथरे बहुत लोग कंफ्यूज होंती एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज़ टेम्परेचर बढ़िले एंट्रोपी बढ़िबो रैंडमनेस बढ़िबो बट चेंज इन एंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर काहे ना टेम्परेचर जत्ते हाई टेम्परेचर को हमें जिबा सेते बेले गोटे गिवन अमाउंट ऑफ हीट पई चेंज इन एंट्रोपी कम हे जिवो जदि हमें 0 डिग्री सेल्सियस रे 2 कैलोरी हीट देबा तो जत्ते एंट्रोपी बढ़िबो 100 डिग्री सेल्सियस रे 2 कैलोरी हीट देले ताटू कम एंट्रोपी बढ़िबो तो एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ला बट चेंज इन एंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ला तो सेडा ही लिखि एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर देयरफॉर द चेंज इन एंट्रोपी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हला केना जत्ते अधिका हीट देबा सेते अधिका एंट्रोपी चेंज हो बट जते हाई टेम्परेचर रे हीट देबा सेते कम एंट्रोपी चेंज हो तो del s इज इक्वल टू del q by t
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ एटा गोटे रिवर्सिबल प्रोसेस पय सेति में क्यू रिवर्सिबल लिखा है टोटल एंट्रोपी चेंज केते हबो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग तो गोटे बट क्राइटेरिया होची स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज 0 टू अधिक हवा दरकार टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हवा दरकार टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय del S total is equal to entropy change of the system plus entropy change of the surrounding greater than 0 तो गोटे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस सेतेबेले हो जेतेबेले तार टोटल एंट्रोपी चेंज दैट इज सिस्टम रो एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग रो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होबो और ग्रेटर देन 0 होबो now when a system is in equilibrium the entropy is maximum and the change in entropy that is del S equal to 0 तो जेतेबेले सिस्टम इक्विलिब्रियम रे रहबो सेतेबेले तार एंट्रोपी मैक्सिमम हो जदी एंट्रोपी मैक्सिमम होला आ एंट्रोपी केबे बढ़ी परिबनी कि चेंज हे परिबनी तो चेंज इन एंट्रोपी सेतेबेले 0 हो जिवो entropy for a spontaneous process increases till it reaches the maximum and at equilibrium change in entropy is 0 एटा हम देखले तो गोटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कोन हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सब बेले चाहिबो कि रैंडमनेस बढ़े तो जे टुवर्ड्स हायर एंट्रोपी सब बेले ट्रैवल करिवो तो धीरे 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 जेमिति स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ला आगु आगु बढ़िबो तार एंट्रोपी टा भी इंक्रीज करि कर जिवो गोटे पॉइंट रे जेतेबेले से रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर दबो तापर एंट्रोपी बढ़िबोनी आ तापर एंट्रोपी न बढ़िले del S equal to 0 हो जिवो बा फर्दर चेंज इन एंट्रोपी 0 हो जिवो तो एठो हम जणा पड़ला del S सिस्टम देखो जेमिति हम टोटल एंट्रोपी पे q रिवर्सिबल टोटल बाय t टेंपरेचर नेले सेमिति एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम पे हम q रिवर्सिबल ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेंपरेचर ने जो एठो हम जणा पड़ला जे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जेतेबेले हम आइडियल गैस रो कंसीडर करथिले आइसोथर्मल कंडीशन रे हम जानछे आइसोथर्मल कंडीशन रे एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज दीडा जगह 0 होची तो आइसोथर्मल कंडीशन रे del U तो 0 होला बट del S total that is del S system plus del S surrounding is not 0 for irreversible process तो एथरो जणा पड़छि कि जेतेबेले गैस रो एक्सपेंशन होतला आइसोथर्मल कंडीशन रे सेटा गोटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थिला हमहु जागुतला कि del H 0 होला del U 0 होला बट del S total जो अछि दैट इज del S of the system plus del S of the surrounding सेटा 0 होबनी दैट मींस isothermal expansion of the ideal gas is an irreversible or spontaneous process तो del U देखो हमको does not discriminate between reversible and irreversible del U रु हमको जणा पड़िबनी कि सेटा गोटे irreversible ना reversible process काहे ना रिवर्सिबल प्रोसेस केबे भी स्पॉन्टेनियस होबनी हम मु स्टार्टिंग रे कोन कहितली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सब बेले इरिवर्सिबल सेटा को रिवर्स करिया पे गोटे एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा वर्क दरकार तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन दीडा जगह पई del U 0 होबा आइसोथर्मल कंडीशन रे बट आइसोथर्मल कंडीशन रे इरिवर्सिबल पई del S टोटल दा 0 होबन del रिवर्सिबल पई del S टा 0 काने रिवर्सिबल रो मीनिंग कोन थिला एवरी मूवमेंट रे गोटे इन्फिनिटेसिमल चेंज होची जो जोगु सिस्टम ऑफ सराउंडिंग एवरी मूवमेंट रे नियर इक्विलिब्रियम रहसन हम ऊपर देखले कि इक्विलिब्रियम रे सब बेले एंट्रोपी चेंज 0 होबो तो एई केस रे हमहु डिफरेंस एडर जणा पड़ियो कि आइसोथर्मल कंडीशन रे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन रे del U दीडा जगह पे 0 होला बट सही आइसोथर्मल कंडीशन रे रिवर्सिबल एक्सपेंशन रे del S 0 होबो del S टोटल 0 होबो बट इरिवर्सिबल एक्सपेंशन केस रे del S टोटल 0 होबोनी सेटारू del S रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भितरे डिफरेंस कहि पारला डिफरेंस डिस्क्राइब कर पारला बट del U कहि पार नथला now in which of the following entropy increases or decreases a liquid crystallizes into a solid liquid जदि solid रे crystallize हला obviously more order increase हला solid state रे order highest अछि तो entropy decrease करला temperature of a crystalline solid is raised from 0 K to 115 देखो temperature जदि increase कला एटरे से कोन कहिछि एंट्रोपी इंक्रीज करछि ना डिक्रीज करछि चेंज इन एंट्रोपी कहनी माने एंट्रोपी टेंपरेचर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एंट्रोपी देखो टेंपरेचर रेज करले अधिका जोर रे मूव करिवे ऑसिलेट करिवे अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन तत्पर एंट्रोपी इंक्रीज करे 2NaHCO3 रो Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड H2 देखो एठे दीटा मोल सॉलिड थिला एठे गोटे मोल सॉलिड सहित दीटा मोल गैस बाहरला हम जानचे गैस रो एंट्रोपी अधिका तो products represent a condition of higher entropy because it is two gases बाहरला similarly देखो एठी H2 gases रो दीटा H gases एठी गोटे मॉलिक्यूल थिला एठी दीटा एटम होला तो एंट्रोपी ऑब्वियसली इंक्रीज करिवो बिकॉज़ गोटे मॉलिक्यूल रो दीटा एटम असला नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करला माने गोटे मोर डिसऑर्डर स्टेट सो हायर एंट्रोपी हो
नेक्स्ट होची गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। एथरो हमें देखिले कि टोटल एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल एस टोटल डिसाइड्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। तो डेल एस टोटल जदी इक्वल टू 0 सेटा इक्विलिब्रियम, del s total जदि greater than 0 सेटा spontaneous process, del s total जदि less than 0 सेटा non spontaneous by reversible process। ओके, del s total reversible, del s total greater than 0 means irreversible process by spontaneous process, del s total less than 0 reversible, del s total equal to means equilibrium attain ହେଇଯାଇଛି। But most of the chemical reactions fall into the category of either closed systems or open system। तो most of the chemical reaction जो था सेटा either closed system रे हुए but open system रे हुए। For therefore for most of the chemical reaction there are changes in both enthalpy and entropy। तो खाली डेल एच टोटल एथे हमें कौन कंसीडर करथिले, हमें डेल एच को चेंज होनी बोली कंसीडर कर देथिले। बट नॉर्मली केमिकल रिएक्शन माने ओपन बा क्लोज सिस्टम रो सेही केस रे एंथैल्पी भी चेंज हुए और एंट्रोपी भी चेंज हुए। तो दीटा जगर रोल रहबो स्पॉन्टेनिटी पे। काहे हम स्टार्टिंग रे कोन कहथिले गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो अछि से सोल फैक्टर नहीं ऑब्वियसली डिसाइड करिया पे, बट जत्ते अधिक एक्सोथर्मिक हो रिएक्शन सेते अधिक स्पॉन्टेनियस हेबार तार प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करिवो। तो सेतु जणा पड़छि कि चेंज इन बोथ एंथैल्पी और एंट्रोपी होछि माने दीटा जगह को हम कंसीडर करी गोटे आउ गोटे नुवा थर्मोडायनामिक फंक्शन खोजियो पड़ियो। So there will is neither decrease in neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the direction of spontaneous change for this system। तो एमिदिया जदि सिस्टम अछि जोठा ओपन वा क्लोज सिस्टम अछि जोठरे बोथ एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज होछि, खाली डिक्रीज इन एंथैल्पी बा इंक्रीज इन एंट्रोपी को एकोडिया कंसीडर करी के हम कहि परन कि डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन हो। तो सही दिशा में गोटे नुआ थर्मोडायनामिक फंक्शन काले जोड़ा को आबो गिब्स एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी जोड़ा जी और जी रो मीनिंग होची एंथैल्पी माइनस टेंपरेचर इनटू एंट्रोपी। जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी माने सेटा अमाउंट ऑफ मैटर ऊपर डिपेंड करे और सेटा गोटे स्टेट फंक्शन भी। चेंज इन गिब्स एनर्जी को हम कौन लिखिबा डेल एस डेल जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल एच सिस्टम माइनस टी डेल एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम डेल टी। कहीं ना देखो जी माइनस जी इज इक्वल टू कौन होला एच माइनस टी एस, राइट। जी इक्वल टू होला एच माइनस टी एस, जी इक्वल टू एच माइनस टी एल। तो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस माइनस एस डेल टी हम। बट यही केस रे हम कौन नले कांस्टेंट टेंपरेचर नले दैट इज डेल टी इक्वल टू 0 होला। तो एई जिंसडा 0 होय वाला। therefore del g system equal to del h system minus t del s system। एटा गोटे फार्मूला हमरो जनरेट होला फॉर गिव्स फ्री एनर्जी। एथरो हमको जणा पड़ियो जे both gives free energy रे दीटा जको टर्म कंसीडर होला दैट इज स्पॉन्टेनिटी पई जोड़ा रेस्पोंसिबल दैट इज एनर्जी केते रिलीज होची जते एक्सोथर्मिक हो सेते अधिक स्पॉन्टेनिटी पई फैसिलिटेट करियो और एंट्रोपी जते बड़ हो सेते अधिक फैसिलिटेट करियो और गिव्स फ्री एनर्जी रे यूनिट भी जूल। एठे हम गोटे अबे गिव्स फ्री एनर्जी रो कोन कंडीशन अछि कि केमे जाना पड़ियो गिव्स फ्री एनर्जी को देखि कि सही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना नॉन स्पॉन्टेनियस सेटा केमे जाना पड़ियो। डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग देन द टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम। तो हमें ये बेसिक फार्मूला जानछि कि डेल एस टोटल इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। जदी हमें एबे टेंपरेचर चेंज को 0 लिखले, टेंपरेचर चेंज 0 माने थर्मल इक्विलिब्रियम रे अछि, सिस्टम और सराउंडिंग रे टेंपरेचर सेम अछि। तो इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग विल बी इक्वल टू द डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम हो कि नहीं। तो सिस्टम जदी देखो ये कहूँ कि सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग रे टेंपरेचर सेम रहला। तो जे सिस्टम और सराउंडिंग रे टेंपरेचर सेम रहला तो सिस्टम जते हीट लूज करिवो सराउंडिंग सेते हीट गेन करिवो कि नहीं। तो जदी सिस्टम रो एंथैल्पी x हला माइनस x हला तो सराउंडिंग रो एंथैल्पी चेंज x हबो। जदी x लूज करला से x गेन करिवो। तो therefore entropy change of the surrounding, तो हमें entropy change of the surrounding को कौन लिखेगा del s surrounding is equal to q surrounding heat surrounding divided by temperature। और heat gain by that surrounding केते हला heat gained by the surrounding obviously सत्ती की हबो जत्ती की heat ये रिलीज करछि सिस्टम। तो del h surrounding divided by t को हमें minus of del h system लिख परिया बिकॉज़ सेटा ही मु कहली
जदि ये रिलीज करछि तो सी एब्जॉर्ब करछि ये एब्जॉर्ब करले से रिलीज करछि तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन हे जिवो तो डेल एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल एच सिस्टम तो डेल एस सराउंडिंग रो फार्मूला एडा आसला देयरफॉर डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग को हमें माइनस डेल एच सिस्टम बाय टी लिखि परिया एबे टी टाकू बोथ साइड्स रे हमें टी मल्टीप्लाई करिया टी मल्टीप्लाई करले हबो डेल एस total into t is equal to del s system into t minus del h system एटा गोटे नुआ फार्मूला आसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे कोन होबा दरकार del s total greater than 0 होबा दरकार हम जानछि जदि del s total greater than 0 होबो तो एटा greater than 0 होबो एटा greater than 0 ले पूराटा greater than 0 होबो तो t del s system minus del h system greater than 0 होबो that is minus of del h system minus t del h system greater than 0 होबो अब ए जो फार्मूला एटा कोन थिला एटा ही तो थिला del g सिस्टम यानी माइनस डेल जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो हवा दरकार यानी कि डेल जी सिस्टम लेस देन जीरो हवा दरकार तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन पे दीटा क्राइटेरिया जणा पड़ला हम गोटे होची डेल एस टोटल ग्रेटर देन जीरो और होची डेल जी सिस्टम लेस देन जीरो राइट now del H system is the enthalpy change of the reaction and T del H system is the energy which is not available to do useful work तो del G जो थिला सेटा को गिव्स फ्री एनर्जी कहीं को अछि काने सेटा del H minus T del S को डिपिक्ट करे del H होची टोटल एनर्जी जते सिस्टम पाके अछि बट T del S जो अछि सेटा गोटे फालतू एनर्जी माने सेटा वेस्ट हो जाए यूजफुल वर्क में सेटा अवेलेबल हुए नहीं सेटा कोथरे चली जाए रैंडमनेस इंक्रीज करे पई चली बिकॉज़ सेटा एंट्रोपी सहित रिलेटेड अछि तो सही एनर्जी दा एंट्रोपी जो रैंडमनेस इंक्रीज करे पई चली जाए सेटा यूजफुल वर्क रे यूज होनी तो यूजफुल वर्क कोट हुए टोटल एनर्जी माइनस ए वेस्ट एनर्जी एटा को जाए गिव्स फ्री एनर्जी तो सेति पई एटा को गिव्स फ्री एनर्जी को जाए एटा ही यूजफुल वर्क करिया पई अवेलेबल था now gives free energy gives a criteria for spontaneity at constant pressure and constant temperature constant pressure कहीं constant pressure रही q is equal to del h हबो constant pressure and constant temperature रे del g जदि नेगेटिव हला process spontaneous del g positive हला process non spontaneous by reverse so if a reaction has positive enthalpy change और positive entropy change जो दीटा जगह positive अछि तो सेटा पे spontaneous करे पे either del h को छोटो हबा पड़िबो नले t del s को बहुत बड़ा हबा पड़िबो राइट तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज केमि देसको पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज इधर छोटो हबो अगर छोटो हले t मस्ट बी लार्ज ना जदि पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज छोटो हला देन t को बड़ा हबा पड़े जदि पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज लार्ज हला तो t को छोटो हले भी चलिबो former is one of the reason why reactions are carried out at high temperature generally del g equal to del h minus t del s अछि एटा spontaneity increase करे पे हम जदि टेंपरेचर को increase करिया आर नेगेटिव वैल्यू increase करियो कि नहीं नेगेटिव वैल्यू increase करियो तो नेगेटिव वैल्यू जदि increase कला spontaneity बढ़ियो तो सेथि पे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को हाई टेंपरेचर रे कैरी आउट करा जाय सो दैट समन स्पॉन्टेनियस है एंट्रोपी एंड डायनामिक्स हम जानछि कि आइसोलेटेड सिस्टम रे चेंज इन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट चेंज इन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट मींस ऑब्वियसली किछि भी एनर्जी बा मैटर से आइसोलेटेड सिस्टम दे बाहर को जाय परिबनी so increase in entropy in such a system is a natural direction of the spontaneous change right हम जानले जे गोटा आइसोलेटेड सिस्टम रे चेंज इन द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट therefore increase in entropy in such a system is a natural direction of spontaneous change तो the change in energy constant रहिला गोटा आइसोलेटेड सिस्टम रे एनर्जी चेंज कांस्टेंट अछि तो जदि del g equal to del h minus t del s ru del h टा कांस्टेंट होला तो गोटे ही फैक्टर एबे रहला जे डिटरमाइन करिवो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बना नै से होचे del s this in fact is the second law of thermodynamics एटा ही second law of thermodynamics second law को आउडे वे रे हम लिख परिगा why spontaneous exothermic reactions are so common the second law says that why spontaneous exothermic reactions are so common तो most of the exothermic reaction काहे कि spontaneous होती because हमें देखिले del h जदि नेगेटिव हबो both of the sign negative हेले both sign negative है माने del g higher negative माने से spontaneous होगा तो in exothermic reactions the heat released by the reaction increases the disorder and overall entropy change is also positive which makes the reaction spontaneous तो एथिर गोटे नुवा कांसेप्ट हमहु मिलला कि एटा गोटे निजे निजे रही स्पॉन्टेनियस देखो del g equal to del h minus t del s हला एठी ए केस रे एक्सोथर्मिक हला तो ए del h ला नेगेटिव हला del h रा नेगेटिव हले del g रो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करला तो स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज करला सही नेगेटिव
जो डेल एच हला सा जो हीट रिलीज हला बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर रे क्यू इक्वल टू डेल एच हीट जत रिलीज हला से हीट जो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करला तो स्पॉन्टेनिटी बा एंट्रोपी रो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करला एंट्रोपी रो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करला तो ये नेगेटिव साइन जो ए टोटल रो नेगेटिव वैल्यू और इंक्रीज करला तो डेल जी रो नेगेटिव वैल्यू और इंक्रीज करला तो स्पॉन्टेनिटी और इंक्रीज करला मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस तो नॉर्मली मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस मोशन रे थांती निजर काइनेटिक एनर्जी बा थर्मल एनर्जी जो दैट इज ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन थाए तीनटा एक्सिस रे तीनटा मोशन व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस तो टेंपरेचर इंक्रीज करियो द मोशंस बिकम मोर विगरस एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस तो ये तीन जो था ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन टेम्परेचर जमी जमी इंक्रीज करी जाए मोशन सेमानकर आउरी विगरस हेगी जाए बा एंट्रोपी इंक्रीज करे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करे एंड टेम्परेचर डिक्रीज करे एंट्रोपी डिक्रीज करे तो entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature reaches absolute zero तो गोटे जिनस मु स्टार्टिंग रे कहतिली absolute zero रे ऑलमोस्ट सब मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाए मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाए एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जदि गोटे प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अछि टेंपरेचर जता में बढ़ेबा एंट्रोपी बढ़ुची तो टेंपरेचर जो डिक्रीज करके लोएस्ट पॉसिबल टेंपरेचर दैट इज एब्सोल्यूट जीरो जीरो केल्विन कर दवा तो सही केस रे एंट्रोपी पूरा जीरो हो जाए तो सही केस रे हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करि परिबा तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करिया पे हेल्प करछि importance of the third law lies in the fact that it permits the calculation of absolute values of entropy of pure substance from thermal data alone तो एथर हमको एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी मिल परियो नॉर्मली हमें खाली एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते बट जदि हमें 0 केल्विन रे एंट्रोपी 0 होची तो सेही थ्रू हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर परिया नेक्स्ट गिव्स फ्री एनर्जी जो हमें जानले कि इक्विलिब्रियम रे कौन हबो देखो इक्विलिब्रियम रे डेल जी जदि नेगेटिव हला स्पॉन्टेनियस डेल जी जदि पॉजिटिव हला नॉन स्पॉन्टेनियस डेल जी जदि 0 हला इक्विलिब्रियम ओके सिमिलरली जदि डेल एस टोटल पॉजिटिव हला स्पॉन्टेनियस नेगेटिव हला नॉन स्पॉन्टेनियस 0 हला इक्विलिब्रियम so the criterion for equilibrium comma a plus b is at equilibrium sign c plus d therefore this reaction del g zero होला तो एक ऐसे एटा इक्विलिब्रियम होगा तो गिब्स एनर्जी इन व्हिच ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी लिखाबो ए देखो एटा गोटे माइनस वाला साइन ऊपर रखाला is the equilibrium constant of the reaction अब जति del g of the reaction equal to 0 होला at equilibrium तो del g obviously equilibrium constant सहित related थिबो equilibrium constant सहित del g रो relation होची del g of the reaction standard gives energy change of the reaction is equal to minus rt into ln k okay minus rt into ln k that is del g standard del g of the reaction equal to minus 2.303 rt log k okay बट हमें एटा भी जानछि कि सेटा डेल स्टैंडर्ड गिव्स फ्री चेंज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज माइनस टेंपरेचर इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज हबो और एटा इक्वल टू माइनस आरटी लॉन के हबो तो एटा गोटे नवा फार्मूला जनरेट हला कि डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू माइनस आरटी लॉन के तो जदि हमें गोटे स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन हवा स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन रे डेल एच लार्ज हबो और पॉजिटिव हबो in such a case value of the k much smaller than 1 asio because it a ln अछि तो much smaller than 1 asio due to a negative sign a reaction is unlikely to form much product जदि obviously equilibrium constant रो जाना पड़े equilibrium constant जदि बहुत अधिक हला से रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन अधिक जेबो equilibrium constant जदि बहुत छोट होला सेरा reactant के साइड रे मोस्टली रह जेबो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक reaction del H large and negative होबो ए केस रे del G is likely to be large and negative too so in this case काहे कि बिकॉज़ del H जति लार्ज और नेगेटिव होला सही हीट जो डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस इंक्रीज करिवा और del H मोर पॉजिटिव होबो तो टोटल रे del G लार्ज एंड नेगेटिव होबो in such case k will be much larger than 1 और एमिडिया रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बेसी ट्रैवल करिवो तो एक्सपेक्ट therefore we expect strongly exothermic reactions to have a large k
ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କହେ कि ए देखो एथे आउट एक्सप्लेनेशन मिलला काहे कि स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसी स्पॉन्टेनियस और बेसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे बिकॉज़ स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रो लार्ज के हबो और लार्ज के मींस they go to near completion of the reaction. Del G also depends upon del S, that is if the changes in the entropy is also taken into account, and the value of the K or extent of chemical reaction can also be affected depending upon whether entropy change positive अछि बा नेगेटिव अछि. ओके तो एठी गोटे टेबल दिया अछि जोठरे से समराइज कर देछि कि डेल एच और डेल एस रो रिलेशन केमे दिया हले डेल जी केमे दिया आसीबो डिस्क्रिप्शन कोन तो डेल एच जदी नेगेटिव अछि माने जदी एक्सोथर्मिक अछि और डेल एस अछि पॉजिटिव तो डेल जी सबु बळे नेगेटिव ही आसीबो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेंपरेचर जदी एटा एक्सोथर्मिक अछि बट एटा नेगेटिव तो डेल जी सत्ते बेले नेगेटिव आसीबो जतबेले टेंपरेचर लो हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेंपरेचर जतबेले नेगेटिव अछि एटा और एटा अछि नेगेटिव तो डेल जी पॉजिटिव हे जिवो एट हाई टेंपरेचर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेंपरेचर जतबेले एंडोथर्मिक अछि और एटा एंट्रोपी अछि तो एटा पॉजिटिव आसीबो एट लो टेंपरेचर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेंपरेचर हो जदी एंडोथर्मिक अछि और पॉजिटिव एंट्रोपी अछि तो नेगेटिव होबो एट हाई टेंपरेचर दैट इज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेंपरेचर बट जदी गोटे एमिडिया एंडोथर्मिक रिएक्शन अछि जार एंट्रोपी चेंज नेगेटिव तो सही केस रे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेंपरेचर है ओके गोटे दिडा क्वेश्चन एठी देजी से क्वेश्चन को देख देबा calculate the del G of the reaction for conversion of oxygen to ozone 3/2 oxygen gas gives rise to ozone gas 290 Kelvin if the Kp for this conversion is 2.47 into 10 to the power minus 29 तो एठी से फार्मूला यूज करिवो del G equal to minus 2.303 RT log K तो del G रो फार्मूला से पचार छी तो इट डायरेक्ट minus 2.303 into R रो वैल्यू बिकॉज़ एठी से कोन देछि केल्विन रे देछि हमको नॉर्मल जूल रे कैलकुलेट करछि तो 8.314 into RT केल्विन रे log K तो एठो हमको आंसर आसीगला 163 find out the value of equilibrium constant for the following reaction at 298 Kelvin equilibrium constant रो वैल्यू पचार equilibrium constant equal to देखो एई सेम फार्मूला यूज हला del G equal to minus 2.303 RT log K थीटा तो log K equal to minus del G by 2.303 into RT असला तो यही केस में कैलकुलेट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर ले 2.4 into 10 to the power 2 एंटीलॉग ए फाइन एंटीलॉग रो वैल्यू से at 60 degrees Celsius dinitrogen tetroxide is 50% dissociated. Calculate the standard free energy change at this temperature and at 1 atmosphere. से कहूँ कि 60 डिग्री सेल्सियस रे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड 50% डिसोसिएटेड अछि 50% डिसोसिएटेड अछि माने देखो एटा होछि तार डिसोसिएशन वाला रिएक्शन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो डिसोसिएट करिवो 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करिवो जदि एटा 50% डिसोसिएटेड अछि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस will be given by 1 minus 0.5 by 1 plus 0.5 is 2 तार 2 into 0.5 by 1 plus 0.5 तो पार्शियल प्रेशर है जीवो एमिदी यार पार्शियल प्रेशर of N2O for gases है जीवो एती into 1 atmosphere now partial pressure of NO2 is equal to equilibrium constant Kp is equal to partial pressure of NO2 square divided by partial pressure of N2O4 जोड़ा 1.5 by 1.5 square into 0.5 equal to 1.33 atmosphere is equal to equilibrium constant रेट हम देखो तो एई केस रे से हमको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करया पई कहछि तो एटा गोटे बहुत ही मस्त क्वेश्चन जोटा जेई एडवांस लेवल रो क्वेश्चन जेई एडवांस रे सेम क्वेश्चन आसीबार चांस भी अछि तो एटा also देखो 60 डिग्री सेल्सियस रे एटा 50% डिसोसिएट कला सेही 50% डिसोसिएशन यूज करी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो वैल्यू काढले 1.33 एटमॉस्फेयर एबे से पचाछि गिव्स फ्री एनर्जी सिंपली माइनस आरटी लॉन के करिया माइनस आरटी लॉन के करले आंसर आसला माइनस 763.8 किलोजूल पर मोल एबे हम करबा क्वेश्चन सॉल्व a reaction a plus b plus c a plus b gives us to c plus d plus q means एठी कोन होई छै देखो c plus d plus q means एटा reactant side रे heat लेखा छै reactant side रे heat लेखा छै माने heat produce छै माने एटा गोटे exothermic reaction माने del h is equal to negative
सी कहछि पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज अछि, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज अछि तो सेही टेबल को हमें जिबा डेल एच नेगेटिव अछि और डेल एच पॉजिटिव अछि तो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस एटा जदि नेगेटिव अछि और एटा पॉजिटिव अछि रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट एनी टेंपरेचर अब ऑब्वियसली देखो रिएक्शन पॉसिबल एट एनी टेंपरेचर हबो ना नहीं देखो डेल एच जदि नेगेटिव अछि और डेल एस पॉजिटिव अछि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेंपरेचर अछि बुझला सी रिएक्शन एट यूज होला सी कांसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा जोड़ा हम काली छाड़ देथिले बिकॉज़ सेटा स्पॉन्टेनिटी बा एंट्रोपी वाला क्वेश्चंस थिला तो फर्स्ट क्वेश्चन करिया द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज एंथैल्पी देछि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज 30 किलोजूल per mole and entropy is 75 joule per mole 75 जूल यानी कि देखो एंथैल्पी एंथैल्पी देछि 30 एंट्रोपी देछि 75 जूल तो एटा को हम किलो जूल रे आनिबा 75 by 1000 करिवा the boiling point of the liquid at 1 atmosphere boiling point of the liquid at 1 atmosphere माने del s equal to del h by t होगा नहीं तो सही boiling point पे हमको del h by del s करिया पड़ेगा तो 30 divided by 75 into 1000 25 3 सा 25 40 सा 3 1 सा 3 10 जा तो 400 Kelvin is the right answer right 400 Kelvin right answer next question करियो for the process H2O liquid to H2O gaseous at temperature 100 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure, the correct choice is correct choice कोड़ा हबो देखो हम गोटे जिंस जानचे जे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रे H2O लिक्विड टा कन्वर्ट होची H2O गैसियस रू तो एटा गोटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की नहीं 100 डिग्री सेल्सियस रे वाटर को वेपोराइजेशन हेबा गोटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमें जानचे तो डेल एस टोटल will be greater than 0 हबो बट एथिरे कोन होची एथिरे हमर हीट एब्जॉर्ब होची ना नहीं सिस्टम कोन करची हीट एब्जॉर्ब करची सिस्टम जदी हीट एब्जॉर्ब करूची बट एई केस रे डेल एस टोटल हां 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 गोटे दिन देखो जदी हमें कंसीडर करबा जदी हमें कंसीडर करबा कि एटा गोटे स्टेट चेंज कंडीशन देखो एटा कोन कंडीशन एटा होची बॉइलिंग ऑफ वाटर टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रे वाटर लिक्विड कन्वर्ट होची वाटर गैसियस रे मींस एटा गोटे चेंज ऑफ स्टेट वाला कंडीशन हम जान से चेंज ऑफ स्टेट सब बड़े गोटे इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम कंडीशन रिमेंबर चेंज ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम कंडीशन अब जान से इक्विलिब्रियम रे डेल एस टोटल इज इक्वल टू 0 होबो डेल एस टोटल 0 होबो मींस डेल एस सिस्टम और डेल एस सराउंडिंग के भी सेम साइन वाला हबे नहीं तो एटा भूल और एटा भी भूल एबे डेल एस सिस्टम ग्रेटर हबो ना लेसर हबो डेल एस सिस्टम ऑब्वियसली ग्रेटर हबो बिकॉज़ सिस्टम कोन सिस्टम होची वाटर वाटर लिक्विड रू गैसियस होची गैस होची माने कि सिस्टम रो एंट्रोपी ऑब्वियसली बढ़ुची तो 15 रो बी हबो माने सिस्टम रो जदी एंट्रोपी बढ़ुची सही सेम हीट टा से एब्जॉर्ब करी कि नउची सराउंडिंग रो मीन सराउंडिंग रो हीट कम होची मीन सराउंडिंग रो एंट्रोपी भी कम होची तो देखो डेल H2O लिक्विड रू H2O गैसियस हला 100 डिग्री सेल्सियस में मींस एटा गोटे बॉइलिंग कंडीशन बॉइलिंग होची गोटे चेंज ऑफ स्टेट वाला कंडीशन आ जानचे सब चेंज ऑफ स्टेट कंडीशन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम रे डेल एस टोटल इक्वल टू 0 तो डेल एस सिस्टम जदी पॉजिटिव हबो तो डेल एस सराउंडिंग
negative haba. If an endothermic reaction is non-spontaneous at freezing point of water becomes feasible at its boiling point, then से कौन कि endothermic reaction अच्छी गोटे endothermic reaction अच्छी जोटा नॉन स्पॉन्टेनियस अच्छी freezing point of water है endothermic reaction del G equal to del H minus T del S एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस अछि माने फर्स्ट कंडीशन रे एटा पॉजिटिव अछि नॉन स्पॉन्टेनियस माने एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि एटा 0 डिग्री सेल्सियस अछि और एटा गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन एटा भी पॉजिटिव अछि नेगेटिव becomes feasible at boiling point रे जतले एटा 100 डिग्री सेल्सियस हला एटा तो किछि चेंज होबनी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही एटा हे जाउछि नेगेटिव माने टेंपरेचर एते बढ़ी जाउछि जे एटा एटा नेगेटिव हे जाउछि व्हिच मींस del H और del S दीटा जाको पॉजिटिव अछि del H जदि नेगेटिव थांदा टेंपरेचर बढ़िले ए टर्म टा भी पॉजिटिव हे जाथना तो एटा सबोले नॉन स्पॉन्टेनियस हे जाथना a heat engine absorbs heat Q1 at temperature T1 and heat Q2 at temperature T2 work done by the engine is Q1 plus Q2 एटा को डाटा को वायोलेट करछि जदि टेंपरेचर T1 रे एब्जॉर्ब करला हीट Q1 और टेंपरेचर T2 रे एब्जॉर्ब करला Q2 वर्क डन बाय द इंजन Q1 plus Q2 हल्ला बोली से कहछि तो हमें जानछे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड तो हमें देखि कि कार्नोट साइकिल इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल but during conversion of heat into work, some mechanical energy is always converted to other form of energy. Therefore, it violates the first law of thermodynamics. Okay. तो हमें जानछे कि कार्नोट साइकिल जो अछि कार्नोट साइकिल रे कोन होय कार्नोट साइकिल टा गोटे सबुटु एफिशिएंट अछि कार्नोट इंजन होय सबुटु एफिशिएंट इंजन जोटा मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क करे बट से कहै छी कि जदी हीट Q1 एब्जॉर्ब करला एट हीट Q2 एब्जॉर्ब करला तो वर्क डन सबले Q1 plus Q2 एटा रॉन्ग हीट वर्क डन Q1 plus Q2 रु अधिक आबो बिकॉज़ वर्क डन सब केबे भी सब जगह वर्क हमर टोटल हीट रे कन्वर्ट हुएनी किछि ना किछि जो अछि सब जगह जो हीट केबे भी टोटल कन्वर्ट हुएनी किछि ना किछि सेटा हमर चली जीवो टू लॉस माने सेटा वेस्टफुल रिएक्शन रे चली जीवो तो एटा वायोलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स so for the reaction carbon plus oxygen टू कार्बन डाइऑक्साइड इतना आर नेगेटिव अछि एंथैल्पी चेंज आर भी नेगेटिव अछि एंथैल्पी चेंज तो एटा कोटा पॉसिबल हो बोली से कहूची तो एटा हम देखु कि del H नेगेटिव शो करछि कि दीटा जाक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अछि ऑब्वियसली बिकॉज़ हमको एंट्रोपी विषय रे किछि कहनी तो हमें ओनली एंथैल्पी को देखिकी ही अज्यूम करबा कि जदि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव अछि तो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो बिकॉज़ हमको एंट्रोपी विषय रे किछि कहनी तो हम एटे गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करि परिबानी तो जस्ट एंट्रोपी एंथैल्पी को देखि हम एडो अज्यूम करबा कि रिएक्शन दीटा जाक स्पॉन्टेनियस अछि देखो तो हायर नेगेटिव वैल्यू आर अछि हायर नेगेटिव वैल्यू आर अछि माने ए रिएक्शन मोर oxidation more spontaneous therefore carbon can oxidize zinc होची right answer okay higher negative value for zinc shows that the reaction is more feasible a reaction more feasible which means zinc easily oxidize paribo which means carbon zinc को oxidize करि paribo okay sorry it zinc carbon को oxidize करि paribo एटा हम मेटलर्जी रे पढ़छे कि zinc is used to reduce carbon okay sorry carbon is used to reduce zinc which means zinc can oxidize carbon next question jiba next question is identify the correct statement regarding spontaneous process
Regarding spontaneous process, quote are correct. Lowering of energy is the only criterion for spontaneity. Wrong. Lowering of energy is one of the criterion for spontaneity. For a spontaneous process in an isolated system, change in entropy is positive. Change in entropy नहीं, change in total entropy positive होगा. Endothermic processes are never spontaneous. एटा wrong. Exothermic processes are always spontaneous. एटा भी wrong. तो एटा ही correct होगा, right? 21 रो B. Standard entropy of X2, Y2 and XY3 are 60, 40 and 50 for the reaction. This at equilibrium the temperature will be. For this reaction to be at equilibrium केते हबो हमरो तमे calculation करिवा. Standard entropy of X2, Y2 और XY3 से दे देची तो ए reaction रो entropy केते हबो. ए reaction रो entropy हबो entropy of XY3 जहाँ की 50 minus 3 by 2 into y2 row entropy that is 40 minus 1 by 2 into x2 row entropy that is 60. So 20 30 is equal to 0 which means entropy change ए केस रे 0 है वाला. entropy change is equal to 0 वाला. तो ए reaction to be at equilibrium temperature कहते हैं पड़ेगा. entropy change यदि 0 है वाला equilibrium पे del g equal to 0 हुआ पड़े तो del h is equal to t del s अब पड़ेगा ना नहीं. Sorry, del s 0 होबनी. 50 minus 60 minus 30 होबो. That is 50 and 60 is minus 10 minus 40. Minus 40 एटा जूल पर केल्विन रहसला. जूल पर केल्विन एटा जदि हमें से देछि del h is equal to minus 30 किलो जूल नहीं minus 30,000 जूल. तो del g equal to 0 होबा पड़ियो से कहछि इक्विलिब्रियम कंडीशन रो. तो del h equal to t del s हबो तो temperature is equal to del h by del s1 is minus 30,000 divided by minus 40. 4 into 30 into 25 यानी कि 750 Kelvin is the right answer. Okay. Next one is the value of log k. Log k means for the reaction is etiki. Okay, so log k रो value a reaction पे पचाची. log k रो value कहते हैं वो से पचाची. Okay. हमें जानचे del g is equal to del h minus t del s is equal to minus rt ln k. तो del h एट कहते देची minus 54.07 minus t del s t कहते देची 298 Kelvin. 298 into del s देची 10 जूल रे देची. देखो सब जिनसे यदि जूल रे देची हमको एंथैल्पी टा भी जूल रे नेबो पड़ियो. एंथैल्पी टा से हमको किलो जूल रे देची. किलो जूल रे देची मींस इट हैज minus 54070 minus 298 into 10 is equal to minus 8.314 into temperature होची 298 into 2.303 log 10 k. right. एटा ही हम तो जदि हमें एठी देखिबा केते आसुची वैल्यू तो आर वैल्यू आसीबा हमरो 5. एठी से हमु वैल्यू देछि 2.303 into 8.7 298 equal to 5705. तो एटा आसीबा हमरो minus 5705 log 10k. जदि हमें minus 54070 सहित 298 into 10 करिवा तो केते वैल्यू आसीबो